Thank you. Assalamu alaikum. My name is Kiran Ahmed and I'm the Director Operations at PARSA ECHO Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to new ECHO session in series of Hepatitis ECHO. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Please try to join the session through iECHO email link to mark your attendance. We also like to thank Ferosens Laboratories Private Limited for their unrestricted educational grant. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA, intending to disseminate knowledge and best practices. PARSA ECHO Pakistan started as hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. We are following the guidelines of Project ECHO with an objective that community providers learn through video technology to participate in guided practice with specialist mentors. They acquire new skills that allow them to treat patients otherwise referred out. Patients with chronic condition get high quality care without travel and waiting. We protect patient privacy, so no information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for question or use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on request. For CME credits, please get in touch with Uzair. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 24 hours. You are requested to fill it out as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of participants, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our experts for today's session is Dr. Ali Hyder Baloch, is distinguished medical professional who currently holds the esteemed position of associate professor, head of gastroenterology department, and chairman of gastroenterology department at Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Medical University, affiliated with Chandka Medical College in Larkana. In addition to his leadership at the university, Dr. Ali Heather Baloch also served as ex-publication secretary and currently holds the position of joint secretary of Pakistan Society of Hepatology. Dr. Baloch's expertise in gastroenterology, coupled with his dedication to academic and professional organizations, position him as a key figure in the medical landscape. We will also have a case today presented by Dr. Amna after Dr. Ali's presentation. I think Dr. Ali is about to join. So, Dr. Ali, आपका introduction मैंने करवा दिया है. I'm handing over to you for the presentation. जी अस्सलाम डॉक्टर अली वालेकुम। क्या आपको आवाज आ रही है? आप सुन सकते हैं? जी आवाज Dr. Ali, can you hear us? डॉक्टर अली क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? आई थिंक उनके ऑडियो कनेक्टेड नहीं है. जी उजैर, आप डॉक्टर अली से राब्ते में हैं? जी मैं उनके साथ फोन पे हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अली, आप सुन सकते हो? आई होप यू आर कनेक्टेड नाउ. आई थिंक. ओके, मेरे ख्याल में किरण मीनवाइल अली ज्वाइन करते हैं तो वी कैन डिस्कस द केस. आई थिंक फर्स्ट आई जस्ट वांट के टाइम बहुत ज्यादा इस हम ऑलरेडी वी स्टार्ट प्रीटी लेट. और उजैर, आप जरा डॉक्टर अली को करो तो जो हमारा केस है, इफ दैट कैन बी प्रेजेंटेड तो आई कैन स्टार्ट ओपन अप द डिस्कशन एंड डॉक्टर अली कैन सो यू नो ज्वाइन. जिनका जो जो टेक्निकल इशू है रिजॉल्व हो जाता है. जी, if we can start with the case first. Uzair, can you share the screen? Dr. Amna, आप ने केस प्रेजेंट करना है. Over to you. A 59 years old female is non-case of hepatitis B for last 15 years. She is non-hypertensive and non-diabetic. There is an association of family history of also hepatitis B and hepatocellular carcinoma. Investigations are HB is 9.9, TLC 3.2, platelets are 252, serum creatinine 0.8, serum bilirubin 0.5, ALT 44, AST 53, अब हुआ. alkaline phosphatase 308, GGT 47, serum albumin 3.4, globulins are 3.4, total protein 0.9, PCR viral load is 62,390. Workup for B shows hepatitis E antigen is reactive, others are non-reactive, including antibodies for hepatitis E, anti-HIV screening, and anti-HTV. Ultrasound abdomen shows chronic liver disease. Current APRI is 0.5. What treatment plan should we offer her now? जी, थैंक यू आमना. डॉक्टर अली हैदर ने भी ज्वाइन कर लिया है तो वी जस्ट लेट मी क्विकली सम अप. ये जो एक सिनारियो है जो क्योंकि हमारा ये सेकंड सेशन है, अभी हम ये सारी चीजें इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको डिस्कस करेंगे. लेकिन मैं बहुत जो सेलिएंट फीचर्स इस केस के रखना चाहूंगा. बेसिकली वी हैव अ 60 years old female and who's known to have hepatitis B for 15 years. कोमॉर्बिड्स नहीं है और फैमिली हिस्ट्री में भी आपको हेपेटाइटिस बी मिल रहा है और हेपेटाइटिस सी मिल रहा है. तो इस हिस्ट्री में अगर आपको कोई सिम्टम नहीं भी मिले, सिर्फ आप हिस्ट्री के ऊपर जो पहली लाइन जो लिखी हुई है उसके ऊपर आप गौर करें तो यू हैव, इसमें आप एज को इंपॉर्टेंस देंगे. यू हैव एन रादर एल्डरली लेडी. उसके बाद family history of hepatitis B is important and family history of HCC is hepatocellular carcinoma जो कि लिवर कैंसर होता है, which is important. तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. सिर्फ सिर्फ यही इंफॉर्मेशन एक होती है जो हेपेटाइटिस बी. जनरली हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स आते हैं वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होते हैं. और अब इस पेशेंट का जो फर्दर वर्कअप किया, इसमें अगर आपके सामने जो इन्वेस्टिगेशंस का पैनल है उसमें देखें तो वायरल लोड इज देयर. इसका 62,000 इंटरनेशनल यूनिट्स इज द लेवल ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस. ये याद रखें 22,000 से ऊपर सिग्निफिकेंट होता है. डिफरेंट गाइडलाइंस इसको डिफरेंट लेती हैं लेकिन उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और ये वो चीज है जो आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे. शी इज एनीमिक विच इज इंपॉर्टेंट. 9.9 HB इज ऑन द लो साइड. अब इसमें सिर्फ हेपेटाइटिस बी का रोल नहीं है. अगर मैं टेस्टों को ओवरऑल देखूं तो इसके प्लेटलेट्स दे आर नॉर्मल
और AST जो है वो भी इसका बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक एप्री स्कोर है जो हम लिवर फाइब्रोसिस की असेसमेंट के लिए करते हैं, वो इसका जो होगा वो सिरोटिक रेंज में या हाई फाइब्रोसिस रेंज में नहीं होगा। तो हम जहाँ पे लिवर को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन हम एनीमिया के लिए बाकी कॉजेस को भी देखेंगे कि कहीं और से उसको ब्लीडिंग तो नहीं होती, उसके में भी हमें आयरन लेवल यहाँ पे MCV वगैरह नहीं है, उन चीज़ों को भी देखना पड़े। और ये HB लेवल हमारे ट्रीटमेंट डिसीजन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। और ई एंटीजन पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये लोग यूजुअली इन्फेक्शियस होते हैं, दे आर इनका जो 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 इन्फेक्टिविटी है ज्यादा होता है। हर वो पेशेंट जिसका DNA पॉजिटिव है और आप ट्रीटमेंट कंटेम्पलेट कर रहे हैं, आपको HIV जो कि एड्स का वायरस है, और HDV जो कि डेल्टा वायरस है हेपेटाइटिस डी का, दोनों को आपको रूल आउट करना होता है, क्योंकि ये आपके ट्रीटमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि इसका एप्री स्कोर 0.5 है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। अल्ट्रासाउंड पे उन्होंने क्रॉनिक लिवर डिजीज है। और इस इतनी इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं सिर्फ आपको दो चीजें कहना चाहूंगा कि एक तो हमें इसकी हीमोग्लोबिन को डेफिनेटली, मैं इसका फेरिटिन B12 फॉलिक एसिड भी कराऊंगा। फोकस द हिस्ट्री मोर ऑन एनीमिया, और कोई आयरन प्रेपरेशन इसको शुरू करना चाहूंगा। और ये पेशेंट बिकॉज ऑफ हर एज, बिकॉज ऑफ हर फैमिली हिस्ट्री एंड बिकॉज ऑफ हाई वायरल लोड, शी मेरिट्स ट्रीटमेंट। यहाँ पे आई स्टॉप, क्योंकि ये बातें हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इट जस्ट गिव्स यू अ फ्लेवर के हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट्स हैं उनको हम किस तरह आगे लेके चलते हैं। हमने एक लिवर की असेसमेंट करनी होती है, और उसके साथ हमने इसको स्टेज करना होता है बीमारी को, जिसमें ई एंटीजन पॉजिटिव हैं और ई एंटीजन नेगेटिव कैटेगरीज आती हैं। तो ये आगे आपको बहुत डिटेल में, आई थिंक जो नेक्स्ट होगा जहां पे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लैब टेस्ट की बात करेंगे। तो इस केस को जहन में रखिएगा। आई विल like to go back to Dr. Ali Hyder. Dr. Ali, you are with us now? Yes, yes. जी, मैंने जरा शुरू करा दिया था, तो बिकॉज देयर वाज सम टाइम, तो हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। इस केस से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो डॉक्टर अली हैदर की प्रेजेंटेशन के बाद आई विल बी हैप्पी, मैं भी मौजूद हूँ, डॉक्टर अली हैदर भी हैं, तो विल बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस ऑन दैट। वी कैन डिस्प्ले दिस स्लाइड अगेन। So if we can stop share here, and over to you, Dr. Ali, for your presentation. Thank you. जी डॉक्टर उजैर भाई, आप शेयर करेंगे स्लाइड्स? जी, मेरी आवाज आ रही? जी, जी आपकी अली आवाज आ रही? जी, स्टार्ट करें? जी प्लीज। उजैर, आप इसको स्क्रीन उस पे मॉड पे ले जाए ना, स्लाइड, फुल स्लाइड के मॉड। जी जी, थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Dr. Asad and ECO team, for inviting me for today's talk, that is on the clinical features and extrahepatic manifestations of HBV infection. There are no disclosures for today's talk. As we know, hepatitis B is a double-stranded DNA virus. It's a global public health. Round about more than 250 million HBV carriers in the world related to HBV, of whom approximately 6 lakh die annually from the complications of HBV-related liver disease. Next, please. This figure shows you the HBV genome that contains the open reading frames 4. One is and the partially double-stranded DNA. Open reading frame S, open reading frame P, and open reading frame C, and open reading frame X. These open reading frame S that encodes
the surface antigen, open reading frame P that is responsible for the PCR polymerase gene, and open reading frame C that area secretes the hepatitis B core antigen and E antigen, whereas the open reading frame X related proteins are suggested that they are involved in the hepatic carcinogenesis development. And this is a partially double-stranded DNA. Next, please. So what happens when he or she gets exposed to the HBV virus? Next. After exposure, HBV virus targets hepatocytes. It enters into the hepatocyte by certain steps with attachment over the surface receptor, entry into the cytoplasm, then entry into the nucleus. From nucleus, from CCC DNA, the nucleocapsid core protein formation occur. These are enveloped with the surface antigens, and from these negative and positive strand DNA synthesis occur. Then core particle has two fates. One is exit from the cell, and other is entry into the nucleus. So in this way, the cellular pool of CCC DNA is maintained by exogenous virus entry into the cell and by the entry of these core protein particles. We are using nucleoside analogs. These nucleoside analogs are nucleotide analogs inhibit viral replication by affecting these two steps, whereas pegylated whereas interferon that has the effect over the CCC DNA. This is the reason that there are more chances of surface antigen and E antigen clearance with the interferon therapy as compared to the nucleoside analog therapy. Next, please. So after HBV infection, what are consequences? One is acute infection. Second is chronic infection. Acute infection that lasts less than 6 months, for 6 months, less than 6 months, and chronic infection that lasts more than 6 months. From acute infection, again, may be asymptomatic, may have acute viral hepatitis course, or patient may develop acute liver failure. Whereas chronic infection patients may have an active chronic hepatitis, patient may have develop cirrhotic liver. Cirrhosis liver again may be compensated, decompensated, or patient may have develop hepatocellular carcinoma on over background of cirrhotic liver or in the normal liver. Our patient may have in the chronic state in a carrier stage. Next, please. So either patient will get acute infection or chronic infection that primarily depends upon the age at the time of infection. So the cases which get infection during infancy, 90% of these cases progress to chronic infection. From this diagram, it is clear, and they are asymptomatic. Whereas at the age of up to 5 or in adulthood, more than 90% develop features of acute hepatitis and recover. Next, please. Acute hepatitis, again, 70% cases are subclinical or anictoric, having no symptoms. 30% may have a jaundice, and lying patient already have underlying liver disease. Next, please. So acute hepatitis
develops around about 4 weeks to 6 months is the incubation period. In that period of time, patient may develop the features of acute hepatitis that comprises prodromal phase, having malaise, fatigue, low-grade fever, round about 100 to 102 fever, nausea, vomiting, itching, joint and muscle pain that may last a few days. Icteric phase, patient may be jaundiced, having yellow color discoloration of eyes, dark urine. Patient may have a light colored stools, and in coming last few days to weeks, usually less than 6 weeks, the patient, these symptoms improve. Recovery, mostly within 1 to 3 months, patient recover from these symptoms. Next, please. One another feature, persistent fatigue even after normalization of alkaline aminotransferases, or these acute hepatitis patients may have a protracted jaundice remaining for couple of months with the cholestatic pattern, having patient deep jaundice, itching, and one can confuse it with the biliary obstruction. On clinical examination, patient may be jaundiced, having low-grade fever, soft and mildly tender hepatomegaly. Rarely in acute hepatitis, one can find the splenomegaly, spider nevi, or cervical lymphadenopathy. Next, please. What is the outcome of acute hepatitis B? There are observations that either after acute hepatitis B, all the patients get complete eradication of HBV. This is rare. It has been noticed that there is the latent infection after acute infection, acute hepatitis B, that can persist for decades following clinical recovery, and liver damage may be present in these patients having latent infection. So one has to be careful regarding reactivation of virus when he or she is exposed to immunosuppression. Next, please. So acute hepatic failure is another the feature of acute hepatitis, of severe acute hepatitis, in which there is the onset of hepatic encephalopathy, means altered sensorium within 8 days to 26 weeks of first onset of symptoms in the patients without pre-existing liver disease. Means there is no pre-existing liver disease, and then there is the onset of hepatic encephalopathy, altered sensorium within 8 days to 26 weeks of first onset of symptoms. It is unusual but can occur in 0.1 to 0.5% of patients. It is due to the massive hepatic necrosis, and there is high mortality rate. If patient have a deep coma, more than 80% can die if liver transplantation is not provided. HBV infection accounts for more than 50% of fulminant hepatitis cases regarding as far as viruses are concerned. Next, please. So which patients will develop acute hepatic failure and which patients will not develop? There are few risk factors which have been examined, that acetaminophen usage during the illness, alcohol usage, or those who lose more weight in the 6 months before illness, are patients infected with genotype D. Next, please. So this schematic diagram shows the clinical as well as laboratory features of acute HBV infection. For example, this here you see the weeks after exposure, and there are the 24 weeks. This is the period of
from here onward is the period of chronic hepatitis. If we look at here that jaundice, raised alanine aminotransferase, and the presence of the serologic markers. First serologic marker is the hepatitis B surface antigen that appears in the blood before the raised aminotransferases and before the appearance of the jaundice. Next, please. So chronic hepatitis B, round about 30 to 50% of patients with chronic HBV infection have a past history of acute HBV infection. Rest don't have, and for example, perinatally transmitted infection don't have acute hepatitis B infection past history. So outcome of chronic HBV infection depends upon the severity of liver disease at the time of HBV replication is arrested. For example, if HBV replication is arrested when there is no damage to the liver and the liver is 100% okay, the prognosis is good. But if HBV replication is arrested when the features of chronic liver disease are present, then it means the complications of chronic liver disease will continue. So chronic hepatitis B may be asymptomatic or may have a compensated cirrhosis, decompensated cirrhosis. And what are features of cirrhosis? Fatigue is a fatigability. Patient may have jaundice, patient may have ascites, patient may present with the upper GI bleed, patient may have melena, and patient also may have a hepatocellular carcinoma and cirrhotic liver, or liver is 100% normal because of presence of CCC DNA into the hepatocytes, into the genome of hepatocytes. The normal liver can develop hepatocellular carcinoma with the HBV. There may be extrahepatic manifestations and non-specific symptoms such as fatigue may be there. And there are exacerbations of infection which may be asymptomatic, which may mimic acute hepatitis, or patient may present as hepatic failure. So whenever patient comes with the acute hepatitis, one should keep in mind the exacerbation. Whenever patient comes with the hepatic failure, one should keep in mind the exacerbation of chronic hepatitis. Next, please. Physical examination may be normal, or there may be stigmata of chronic liver disease like jaundice, splenomegaly, ascites, peripheral edema, encephalopathy. Altered senses may be there, and decompensated cirrhosis. Next, please. So other than the age, what are the other factors which suggest progression of acute hepatitis to chronic hepatitis? One is lack of complete resolution of clinical symptoms of anorexia, weight loss, fatigue, and persistence of hepatomegaly, protracted and severe acute hepatitis, and failure of aminotransferase, bilirubin, and globulin levels to return normal within 6 to 12 months after acute illness. Whereas persistence of E antigen for more than 3 months or surface antigen for more than 6 months. These are the few features which can suggest progression of acute hepatitis to chronic hepatitis. Next, please. So what is prognosis? Estimated one is prognosis depends upon the clinical setting, as earlier discussed, that depends upon the time when replication is arrested. But if patient estimated 5-year rate of progression from chronic hepatitis to cirrhosis, if 100 patients of chronic hepatitis to cirrhosis, around about 12 to 20 cases from chronic hepatitis will go to cirrhosis in 5 years.
from compensated to hepatic decompensated, round about again 20%. From compensated cirrhosis to hepatocellular carcinoma in 5 years, 6 to 15% of cases may develop hepatocellular carcinoma in compensated cirrhosis. Next, please. So factors which predict disease progression in chronic HBV infection. There are virologic as well as non-virologic factors. Next, please. So the in virological, if patient have a he or she is E antigen positive for prolonged period of time, we know that E antigen denotes the replicative phase. So longer the E antigen present, longer duration of necroinflammation will be there. So high levels of DNA is also an independent predictor that patient may go to the chronic sequelae. And surface antigen, hepatitis B surface antigen levels more than 1000 international unit per ml. This is also an marker with the increased risk of E antigen negative hepatitis flares, and cirrhosis. Next, please. Which are not associated with the HBV. These are the non-virologic host. So HBV, our prevalence is more. So male, advanced age, diabetes, having concomitant use of alcohol, smoking, or other carcinogens, or co-infection with other viruses, they also may have a bad prognosis. Next, please. So these are phases of chronic hepatitis B. We will come this nomenclature in coming program and coming lectures as well. But new terminology, as earlier in the beginning, Dr. Asad has discussed a case that old age, roundabout above 50 years lady was E antigen positive. So here three categories. One is E antigen positive disease, E antigen negative disease, and surface antigen negative. Surface antigen negative is the resolution of hepatitis B infection. In E antigen positive cases, again, if aminotransferases are raised, that is hepatitis, elevated. If aminotransferases are normal, that is chronic HBV infection. So chronic HBV E antigen positive, chronic HBV infection, E antigen positive chronic hepatitis. Whereas in E antigen negative disease, again, we label it hepatitis. Once if patient secretes the enzymes, means enzymes are elevated, but if enzymes are normal, then it is E antigen negative chronic HBV infection. Next, please. So what are extra hepatic manifestations? Either HBV infection can lead to development of extra hepatic manifestation, yes or no? Answer is yes. And these extra hepatic manifestations are mediated by circulating immune complexes. These may occur in patients having acute HBV infection, may occur in patients having chronic HBV infection. In chronic HBV infection, polyarteritis nodosa and glomerular disease are the predominant. Whereas in acute hepatitis, serum sickness like syndrome can be manifested
having a fever, skin rash, arthralgia, and arthritis, which usually subside with the onset of jaundice. Next, please. So serum sickness syndrome is also known as the arthritis dermatitis syndrome. There is the symmetrical generalized inflammatory non-destructive arthritis, typically involving small joints of hands and feet. Skin manifestations can occur at the time of or shortly after joint symptoms. Next, please. Polyarteritis nodosa patients can present with the abdominal pain, and that is due to the ischemia of the gut, and that is ischemia is due to the involvement of the immune complexes of the medium-sized vessels. Means there is the arteritis, vasculitis. So this syndrome usually presents within 4 months of clinical onset of HBV infection. Next, please. HBV-related renal problems do occur. Patient can present with the nephrotic syndrome, having puffiness of eyes, ankle edema, ascites, and anemia due to the membranous nephropathy or membranoproliferative GN. These patients can undergo spontaneous remission, specifically when there is the E antigen seroconversion. And subset of these patients can develop renal failure, specifically in adult age group. Next, please. So this table shows the extrahepatic manifestations in tabular form. We have discussed cryoglobulinemia is usually related to the HCV infection, little with the HBV infection, and rarely HBV infection can present, patients can present with the altered senses, depression, psychosis, or ascending paralysis in the condition known as Guillain-Barré syndrome. Next, please. So by summarizing the presentation, acute hepatitis B, 70% cases have subclinical or anictoric hepatitis, while 30% develop icteric hepatitis. Less than 1% of cases can develop fulminant hepatitis. That is a serious complication. Chronic HBV infection can manifest as an asymptomatically carrier state, or a patient can proceed to chronic active hepatitis, from then cirrhosis liver, hepatocellular carcinoma, and the complications of cirrhotic liver. Extrahepatic manifestations are due to immune complexes and predominantly polyarteritis nodosa. Presentation is the abdominal pain, and glomerular diseases. Presentation is nephrotic syndrome or nephritic syndrome. Next, please. Thank you so much for your kind attention and time. जी असद सर. जी अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच अली. आपने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं. इससे पहले कि हम डिस्कशन में जाएं, मैं से 2-3 चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूं. एक तो आप लोगों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप हेपेटाइटिस बी को डील कर रहे हैं. ये याद रखें, जब ये बच्चों में होता है तो 90% लोग क्रॉनिक इन्फेक्शन डेवलप करते हैं, और जब ये अडल्ट्स में हेपेटाइटिस बी होता है तो तकरीबन 90% लोग ही इस वायरस को क्लियर कर जाते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी होता है. और आमतौर पे वो लोग जिनको जॉन्डिस होता है हेपेटाइटिस बी के साथ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूट हेपेटाइटिस बी, जिस तरह पीला यरकान अक्सर सादे लफ्जों में कहा जाता है. वो लोग उनका हेपेटाइटिस बी कोर आईजी
हम पॉजिटिव होता है कि वो हेपेटाइटिस बी को क्लियर कर जाएं, उनको फिर दवाइयों की जरूरत ना पड़े। दूसरा, अली हैदर साहब ने एक सरफेस एंटीजन क्वांटिफिकेशन का जिक्र किया। ये जो सरफेस एंटीजन क्वांटिटी है, ये सरफेस एंटीजन बाय अलाइजा नहीं है। आपको जब हेपेटाइटिस बी की रिपोर्टें देखते हैं लेबोरेटरियों में से जिसमें सरफेस एंटीजन बाय अलाइजा है, तो आपको एक कट ऑफ मिलता है और अक्सर वो वैल्यू 6490 लिखी होती है या कुछ है। ये वो टेस्ट नहीं है। ये मेरे इल्म के मुताबिक अभी सिर्फ चुगताई लैब कर रही है और आपको कहना पड़ता है सरफेस एंटीजन क्वांटिफिकेशन। इसको सिर्फ जहन में रखें, ये क्लिनिकली हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। और यूजुअली इन 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 प्राइमरी केयर प्रैक्टिस आपको जो गाइडलाइंस आपसे डिस्कस की जाएंगी उसमें इसका बहुत रोल नहीं होगा, लेकिन समटाइम्स हम लोग इन इन स्पेशलिटी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इसको जरूर देखते हैं। सीरम सिकनेस सिंड्रोम को जहन में रखें, जोड़ों में दर्द, फीवर, स्किन रैश, और ये आप देखते होंगे। और अगर आपको अपनी प्रैक्टिस में इस तरह का कोई मरीज मिलता है, यूजुअली ठीक नहीं हो रहा होता, तो आप इसका जो LFT है वो अगर डिरेंज है तो हेपेटाइटिस बी को आप जरूर चेक करें। और थोड़ा सा जो डॉक्टर अली ने जिस तरह से बात की, जो हमने केस डिस्कस किया था जिसमें ई एंटीजन पॉजिटिव आ रहा था, तो इसका मतलब है कि वो फेज उसकी लंबी होती जा रही है, जो कि अगेन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में जाती है। और यूजुअली क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम यही देखते हैं कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट आता है, अगर 6 महीने तक वो पॉजिटिव है तो वो क्रॉनिसिटी है। और आप DNA को चेक करते हैं और कुछ और फैक्टर्स को देख के आप ट्रीटमेंट का डिसीजन लेते हैं। मैं इतना ही कहूंगा इसके बारे में, क्योंकि इसके ऊपर पूरी टॉक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स और whom टू ट्रीट और whom टू मॉनिटर। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि अली हैदर साहब जो हैं, ही इज प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन चानका मेडिकल कॉलेज, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है। एंड आप में से वो लोग जो लाड़काना और उसके आसपास हैं, आप प्लीज अली साहब से जरूर राब्ता करें। ही इज वेरी एक्सेसिबल और वो एक ट्रिमेंडस सर्विस दे रहे हैं और बहुत अच्छा यूनिट है उनका। आई हैव बीन देयर और बहुत खुशी होती है जब आप लाड़काना और उसके इर्द गिर्द के लोगों को जो है सर्व कर रहे हैं, एंड ही इज वर्किंग वेरी पैशनेटली। तो दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। और अभी जो है कोई भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए, ये एक क्वेश्चन जो है अबाउट द स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सिनारियो शोन अर्ली, अच्छा इसका साहब, मैं आपको जवाब। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। ये जो केस है, चूंकि वो मैं ही डिस्कस कर रहा था, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। वो जो हमारा केस था वो ई एंटीजन पॉजिटिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस कैटेगरी में आता है। और इस पेशेंट में ट्रीटमेंट शुरू होनी चाहिए, जिस तरह मैंने आपसे कहा था, आपने उसकी एज देखनी है, आपने फैमिली हिस्ट्री में आपको लिवर कैंसर मिल रहा है, और जो है और वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, हाई वायरल लोड। अली हैदर साहब की प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा 10⁻⁶ कॉपीज पर ml। जो अगर आपने कॉपीज से, आजकल ज्यादा यूनिट्स यूज होते हैं, तो यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो इट इज डिवाइडेड बाय 5, तो वो 20,000 यूनिट पर ml बनते हैं। तो इसका जो वायरल लोड था वो 60,000 के करीब था। तो दिस पेशेंट विल नीड ट्रीटमेंट। हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और ये याद रखें कि हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट में और शुगर के ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये वायरल सप्रेसिव ट्रीटमेंट है और ये जनरली लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होते हैं जब हम मरीजों को हम इसके बारे में गाइड करते हैं। कौन सी दवाई से इलाज होना चाहिए, ये बात हम आगे करेंगे। तो अभी इसके अलावा कोई भी सवाल आपके जहन में है, आपके पास, आप अनम्यूट होके सवाल यू कैन डायरेक्टली आस्क डॉक्टर अली इज हियर। इनकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई सवाल है, आप चैट में क्वेश्चन डाल सकते हैं। जी जी। असद साहब, आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए
इसमें मेरी ये गुजारिश होगी कि सारों को कि जब भी आपके पास कोई भी केस आ जाए तो आप उसकी जो भी लेबोरेटरीज वैल्यूज हैं कोशिश करें उसको कैटेगराइज करें कि ये पेशेंट किस फेज में क्रॉनिक एचबीवी इन्फेक्शन में है, तो किस फेज में फॉल करता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जैसे आपने केस बताया, पेशेंट वाज ई एंटीजन पॉजिटिव हैविंग गुड मतलब more than 20,000 viral load, and there was the family history, so E antigen positive and ALT was higher than the normal. अगर हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस को देखें तो उस हिसाब से ALT वास फीमेल के हिसाब से जो SSLD कह रही है 25 इज अपर लिमिट नॉर्मल, तो इसका ALT जो है वो 44-45 के करीब था। सो ALT वाज हायर। सो ई एंटीजन पॉजिटिव, वायरल लोड भी है और इंजाइम्स भी रेज है। तो ये कैटेगरी ज़्यादातर अगर हम ALT को ले लें तो हेपेटाइटिस में, तो ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये किस फेज़ में HBV इन्फेक्शन, क्योंकि कुछ फेजेस हैं जिनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हो जाता है, और कुछ फेजेस हैं जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और तो इसी तरह इसको कैटेगराइज करना ज़रूरी है। जी। जी, एनी क्वेश्चन? कोई भी कमेंट है आपका, कोई क्वेश्चन है? जी, अली, ये क्वेश्चन है कि व्हेन शुड वी सस्पेक्ट डेल्टा वायरस को इन्फेक्शन एंड शुड वी ऑलवेज लुक फॉर डेल्टा वायरस को इन्फेक्शन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस जी, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया कि co-infections either with delta or with other viruses, acute हेपेटाइटिस वर्स हो सकता है, और ऑलरेडी अगर पेशेंट को क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो उसी के ऊपर अगर डेल्टा हो जाए तो वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वर्स हो सकती है। सो सिवियरिटी ऑफ डिजीज आइदर एक्यूट हेपेटाइटिस, दो वायरस इकट्ठे अगर हो जाते हैं या ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज में, तो severity of disease. Yes, it is teaching of our teachers that specifically Professor Altaf Alam, that whenever you find surface antigen positive, go for anti-HBV. So that is utmost important and necessary to ask for anti-HBV ELISA. जी जी, ये एक और क्वेश्चन है एप्री के लिए, विच इज AST टू प्लेटलेट रेशो है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला तो आप कभी भी नहीं उस तरह से कर सकेंगे। ये मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा भी है, आप गूगल पे या किसी पे या आप एक MD कैल्क के नाम से है, उसको आप देख सकते हैं। उसकी गालबन ऐप भी है, ये आपको प्ले स्टोर वगैरह पे भी मिल जाएगी। इस पे हर तरह का कैलकुलेटर है, एप्री भी है, चाइल्ड स्कोर का भी है, मेल्ड भी है, GFR का भी है, बॉडी मास इंडेक्स, आपको कोई 20-100 के करीब कैलकुलेटर मिलेंगे। और एप्री के लिए वो आपसे जो सवाल पूछेगा, एक आपसे वो AST पूछेगा और दूसरा आपको वो प्लेटलेट काउंट पूछेगा। और एप्री अगर मोर देन 1.5 है तो वो हाई डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस को रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे हम एप्री कलेक्ट करते हैं। मैं अक्सर अपने जो कोलीग्स हैं, जो डॉक्टर्स, अगर जो टेबल पे बैठ के आपका कैलकुलेटर भी इतना रश है, तो 3 चीजों को मैं बहुत फोकस करता हूं। अगर मरीज का, ये हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, अगर किसी का AST ALT से ज्यादा है,
उसके प्लेटलेट्स 150 से कम है और अल्ट्रासाउंड पे स्प्लीन लार्ज है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये सिरोसिस होगा। ये आपके बड़ा, जब आप देख रहे होते हैं पेशेंट क्लिनिक पे और आपके पास रिपोर्टें आ रही होती हैं, तो अगर प्लेटलेट्स जो हैं वो 150 से कम है, एएसटी एएलटी से ज्यादा है और स्प्लेनोमेगाली है अल्ट्रासाउंड पे, तो ये अनलेस अनटिल प्रूवन अदरवाइज ये सिरोसिस ही होगा। तो ये आप कल मैंने लिखा हुआ है चैट में, काइंडली आप उसको नोट कर लीजिएगा जी। एनी अदर क्वेश्चन? अली, आप थोड़ा बताएंगे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपका, चूंकि आप सिंध की साइड पे हेपेटाइटिस बी पंजाब से तो ज्यादा है, आप जो एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन है वो कितना को देखते हैं, या आपकी कौन सी वाली कॉमन एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन है हेपेटाइटिस बी की जो आप क्लिनिकली ज्यादा देख रहे हैं? जी, यहाँ पे लाड़काना में मुझे ना राउंड अबाउट 10 years हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो फ्यू के राउंड अबाउट 2-3 केसेस थे इन 10 साल में, और दीज हैव दी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चे थे एंड दे वर फाउंड टू हैव HBV infected, HBV related infection, बट अदर एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस वो नहीं आई। डेफिनेटली फीवर जो है वो एक कॉफी देखा है, जैसे सीरम सिकनेस सिंड्रोम में फीवर 102 तक रीच करता है। तो फीवर जो है एक्यूट हेपेटाइटिस में स्पेसिफिकली जो फल्मिनेंट हेपेटिक फेल्यूर के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें ये काफ़ी रैशेस भी मिले हैं, स्किन रैशेस, और हाई ग्रेड फीवर भी मिला है। सोर्स कुछ और भी फीवर का हो सकता है, बट रिट्रोस्पेक्टिवली अगर देखते हैं कि मे बी ड्यू टू दी सीरम सिकनेस लाइक सिंड्रोम। जी, थैंक यू। ये एक और क्वेश्चन है, आई विल आंसर देन वी विल गो ओवर टू किरण। क्वेश्चन है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज फ्रीक्वेंटली फॉलोड बाय हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं कि किसी भी किस्म का सिरोसिस होगा, किसी भी बीमारी से होगा, वो हेपेटाइटिस बी हो का सिरोसिस हो, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का सिरोसिस हो, वो ड्रग इंड्यूस लिवर डैमेज होने के बाद फाइब्रोसिस हो जाए और सिरोसिस हो जाए, किसी भी किस्म का सिरोसिस होगा तो लिवर कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसको जहन में रखें। यूजुअली हेपेटाइटिस बी चूंकि एक डीएनए वायरस है, और ये अभी आपने स्लाइड देखी कि ये सेल के न्यूक्लियस और जीनोम में इनकॉर्पोरेट होता है, तो हेपेटाइटिस बी का कैंसर ज्यादा है एज कम्पेयर टू हेपेटाइटिस सी, लेकिन पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी इतना ज्यादा है कि हम उसका लिवर कैंसर बहुत देखते हैं। ये भी जहन में रखें कि हेपेटाइटिस बी, बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ डीएनए वायरस, उसको जिगर में कैंसर बनाने के लिए सिरोसिस करना जरूरी नहीं है। तो जिस तरह अली ने अपनी स्लाइड में बताया था कि आपको नॉर्मल लिवर में भी एक ट्यूमर मिल सकता है, और ये हम काफी देखते हैं। हेपेटाइटिस बी और फैटी लिवर में भी ये अब हम देख रहे हैं कि उसको नेचुरल हिस्ट्री है, उसमें वायरस जाता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, फिर कुछ सालों के बाद सिरोसिस होता है, उसके कुछ सालों के बाद लिवर कैंसर होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी में सिरोसिस होना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए जो केस हमने आज आपको प्रेजेंट किया है, उसमें चूंकि फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये मैं सवाल का जवाब दे चुका हूं कि विदाउट हेपेटाइटिस बी एंड सी लिवर कैंसर बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, सिरोसिस कोई भी होगा,
किसी भी वजह से होगा वो लिवर कैंसर कर सकता है। जो फाइब्रोसिस होता है, जो फाइब्रोजेनेसिस होता है, वो सारा कैंसर को करता है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। मेरे ख्याल में ये लिवर कैंसर के लिए हम अलग से कोई इसके ऊपर बात करेंगे। अली, कोई कमेंट आपका है तो फिर किरण, टाइम हमारा खत्म हो रहा है, देन विल गो टू किरण। जी, thank you so much, Dr. Asad, for inviting me and giving opportunity to meet with you people and have a talk. Thank you. जी, उजैर, कैन यू प्लीज रीशेयर द फीडबैक फॉर्म ताकि लोग उसको कॉपी कर लें। इसके अलावा आई थिंक इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फीडबैक फॉर्म को हम आपको आई एको के ऊपर भी डाल दें ताकि आपको उसको फिल करने में आसानी हो। नेक्स्ट वीक हमारे पास सेशन आ रहा है HBV सेरोलॉजी टेस्ट एंड इंटरप्रिटेशन। ये प्रोफेसर जावेद इकबाल फारूकी साहब पेश करेंगे। इससे रिलेटेड आपके पास पार्टिसिपेंट्स के पास कोई केसेस अपने हों तो यू आर वेलकम। हम आपको केस फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस करते हैं तो वी कैन ऑल्सो प्रेजेंट द केसेस फॉर यू। And again, we are grateful to Dr. Ali and thankful to Pakistan Society of Hepatology, Ferocens Laboratories Private Limited for the unrestricted educational grant, and our team at PARSA Trust and PARSA ECHO Pakistan. Allah Hafiz. Uzair, you can please call off the meeting. Sure, ma'am. Allah Hafiz, everybody. Thank you so much.